7 Habits of the Highly Effective People, one of my favorite books, of course, after Think and Grow Rich. So इस वीडियो में I am going to make a summary of this book, which is quite a big book. It's a thick book. Let's begin. दोस्तों, बहुत बार जब ये किताब पढ़ते हैं लोग कि 7 Habits of Highly Effective People, ये वीडियो भी देखेंगे तो तुरंत आपको जाना है कि यार मुझे बता कि क्या है 7 Habits. But that is not the right process to get this 7 Habits. अगर आपको ये सही तरीके में 7 हैबिट्स को अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है और जीवन भर इसको यूज करके सुपर इफेक्टिव बनना है, पहले एक बेस बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद में अगर आप 7 हैबिट्स को यूज करेंगे तो ही वो हैबिट्स लॉन्ग लास्टिंग रहेगी. द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज द पावर ऑफ पैराडाइम्स. अ पैराडाइम इज अ मल्टीट्यूड ऑफ हैबिट्स दैट कंट्रोल्स योर हैबिचुअल बिहेवियर. And almost all your behavior is habitual. वो ध्यान से समझिए. A paradigm is a multitude of habits. एक हैबिट, दूसरी हैबिट, तीसरी हैबिट, अलग अलग हैबिट्स इकट्ठा हो गए. फॉर एग्जाम्पल ये 7 हैबिट्स, ये कंबाइन करके एक पैराडाइम बनती है. सो अ पैराडाइम इज अ मल्टीट्यूड ऑफ हैबिट्स दैट कंट्रोल्स व्हाट. क्या कंट्रोल करता है? आपके हैबिचुअल बिहेवियर को. दैट कंट्रोल्स योर हैबिचुअल बिहेवियर, कि जो भी आपका बिहेवियर है वो सारा चीज ये हैबिट्स कंट्रोल करती है. एंड Almost all your behavior is habitual. यानी ज्यादातर हम पूरे दिन 24/7 we are just doing the things routinely without even conscious awareness के ये क्यों कर रहा हूं मैं. So that is what is a paradigm. Now, first understand the paradigm, and the second most important principle to understand is principles. So Stephen Covey क्या बोलते हैं? Build your life on principles and not on personalities. किसी ये स्ट्रैटेजी कर दूंगा, ये टैक्टिक कर दूंगा, ये नई चीज सीख लूंगा, ये AI टूल सीख लूंगा. Well, that is all secondary. पहले आपको आपके प्रिंसिपल, आपके बेस को आपको मजबूत करना है. यू गॉट टू बिल्ड योर लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स. और जब ये प्रिंसिपल्स मजबूत हो गए, जैसे जड़ें मजबूत हो गई, फिर आप उसके ऊपर जो भी आपको काम करना है आप काम कर सकते हो. ऊपर से आपका टैलेंट आएगा, एबिलिटीज आएगी, स्किल सेट्स आएगी, आपकी पर्सनैलिटी आएगी. दैट इज सेकेंडरी. सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एथिक्स. एक है कैरेक्टर एथिक और दूसरा है पर्सनैलिटी एथिक. Character ethic which controls your character, which is determining your character, your value systems, your belief systems, ये character ethic होता है. And what is personality ethic? जो आप बाहर की दुनिया में बताते हो, मे बी आपका इमेज कैसे मेंटेन करते हो, आपका रेपुटेशन कैसे मेंटेन करते हो, ऑल दैट इज आउटसाइड. इन सोशल मीडिया पे आप अपने आप को कैसे बताते हो, ऑल दैट इज आउटसाइड. दैट इज पर्सनैलिटी एथिक. लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस चाहिए तो पर्सनालिटी एथिक पे फोकस नहीं करना है. आपको अंदर कैरेक्टर एथिक पे फोकस करना है. और जब कैरेक्टर एथिक स्ट्रांग होगा उसके बाद में ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी एथिक विल बी स्ट्रॉन्गर एंड यू आर गोइंग टू गेट दोस हैबिट्स, बिकम सुपर इफेक्टिव एंड गेट द सक्सेस. तो ये हो गया हमारा बेस. स्टीवन कोवी हमें एक मैच्योरिटी कंटिन्यूम के प्रिंसिपल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इवन बिफोर स्टार्टिंग द 7 हैबिट्स. वो बोलते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं, वी आर ऑन द डिपेंडेंसी स्टेज. And in most people also maybe throughout their life they're just dependent on the government, dependent on their associates, dependent on their family members. So that's the very low level, first level stage. ये आपकी immaturity सबसे कम होती है. जैसे हम बच्चे हैं, I mean we are born in this world, we don't have any skill sets on our own, so we are dependent on our parents, we are dependent on our father, our mother, our family members. Well, that's very normal. उसके बाद में as we progress in the maturity continuum, second stage आती है which is called as independent. अभी तो यंगस्टर्स बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. इफ यू लुक इन द यूएस, द वेस्टर्न कल्चर, एट द एज ऑफ 15-16 पीपल आर आउटसाइड के नो आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट. इवन यंगस्टर्स इन इंडिया, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट सो दैट आई डोंट वांट टू बी विद माय पेरेंट्स, आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन. मुझे पापा का बिजनेस नहीं करना है, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट. So independence is where you go to the next stage of maturity, where you have your own thinking. कि नहीं मैं उनसे तरह से agree नहीं करता. I am thinking in my own way. You have your own perception. You have your own attitude, your own behavior. You are independent of others. Dependent, you are dependent on someone else. Independent, that means you are alone. You can do everything on your own self. So that's the second stage of the maturity continuum. But to go forward, to really enjoy the long lasting success, एक थर्ड लेवल की मेच्योरिटी आप में आनी पड़ेगी, which most people fail to understand, which is your interdependence.
Yes, my friends, this is the highest level of maturity where you are working in synergy. आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, आप एक टीम वर्क के साथ में काम कर रहे हो. We are all growing together. That's where the interdependence is the highest level of maturity. And जब भी आप maturity आप पाएंगे, at that time you'll see, oh, I want to go beyond this. जैसे 1 और 1 11 होता है. I want to synergize. I want to have a holistic approach. That's the highest level of maturity continuum. तो ये बैकग्राउंड के बाद में, ये बेस के बाद में अब हम शुरू करते हैं what are the 7 habits. Take notes and start to apply the 7 habits. I promise you, if you stay till the end, you are going to develop that first step to start moving into this direction of living a very effective, super successful life. So let's begin. The first habit is be proactive. Being proactive means taking control of your own actions and behaviors. बाहर की environment से कोई stimulus आता है, but you have that particular choice कि मैं उसको कैसे react करूँगा या respond करूँगा. So you can control your actions, you can control your feelings, you can control your thought process, because that's where you can become proactive. आप react नहीं कर रहे हो, but आप proactively काम कर रहे हो. इसमें आगे चल के स्टीवन कोवी introduces us to 2 powerful concepts. One is the circle of concern and the other is a circle of influence. बहुत powerful principles है. Understand this. What is the circle of concern? Circle of concern में वो सारी चीजें आएगी जिसके लिए आप concerned हो. You are anxious, you are worried. For example, क्या होगा दुनिया का यार? I mean, कौन सी सरकार आएगी? अब की बार वापस मोदी सरकार. अच्छी बात है, बुरी बात है. I'm not suggesting any political over here, but yes, आपका जो भी एरिया ऑफ कंसर्न है जिसमें आपको लगता है कि यार मेरा क्या होगा उसमें. नाउ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स व्हाट? इट इज समथिंग इन विच यू हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जाम्पल, आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में है, आपके फूड हैबिट्स आपके कंट्रोल में है, योर बिहेवियर इज इन योर कंट्रोल, योर हैबिट्स आर इन योर कंट्रोल. कि जो भी मेरे खुद कंट्रोल में है, जहाँ पे मैं 100% उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, ऑल दैट विल कम इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट. People who are proactive, जो खुद proactive करते हैं, they first focus on their circle of influence. कि यार मैं किस चीज़ में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. I cannot control what is going to happen. I mean, my vote is important, but ultimately जो भी गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट आएगी. I don't have direct control over that who is going to become the Prime Minister of India. प्रोएक्टिव पीपल जैसे फोकस करते हैं अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, उस पे फोकस करने के बाद में द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स टू एक्सपैंड. सर्कल ऑफ कंसर्न को वो और कवर अप करने लगेगा. दैट मीन्स एज यू बिकम स्ट्रॉन्गर, यू बिकम पावरफुल, यू स्टार्ट टू इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं. ही स्टार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका. That was his circle of influence. He was in South Africa, but as he grew, he kept on influencing the people around him. His entire circle of concern expanded and it reached throughout the world. It became a movement. That's how you can really start to influence and move forward and completely cover all the areas of circle of concern. What happens with reactive people? Reactive people are focusing only on circle of concern. और जिस पे वो उनको influence करना है वो करते ही नहीं है. So what happens? It starts to shrink. You are just concerning क्या होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कैसे होगा. I mean, what will happen to the economy? कैसे मेरी सेविंग्स होगी, मेरा रिटायरमेंट कैसे होगा. They are just focusing on the circle of concern without taking actions relevant today. So जैसे जैसे वो circle of concern पे फोकस कर रहे हैं, influence कम भी फोकस नहीं कर रहे, they are not taking actions, they are reactive. That starts to shrink their circle of influence. One more powerful distinction. बाहर का स्टिमुलस आता है, मे बी जो भी बाहर की सिचुएशन आई, जो भी परिस्थिति है, लेकिन जो आपकी मनस्थिति है वो आपके कंट्रोल में है. सो परिस्थिति कुछ भी है, वो स्टिमुलस है, और जो रिस्पॉन्स आपका है, इससे आप कैसे उसके सामने आपका बिहेवियर रखते हो, दैट इज इन योर कंट्रोल. सो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बोलते हैं फ्रीडम. और जैसे ही ये गैप बढ़ता है, उस गैप में आप फ्री होते हो टू सिलेक्ट माई रिस्पॉन्स. Poor people who are in negative attitude, they're always reacting. I'll give you a simple example. Okay, what is the language of reactive people and what is the language of proactive people? Proactive people और reactive people के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है in the way they speak their words. I'm going to give you some simple examples कि reactive people कैसे बात करते हैं और proactive people कैसे बात करते हैं. Let's understand this. It's very interesting. Reactive language. There's nothing I can do. That's just the way I am. He makes me so mad. They won't allow that. I have to do that. I can't. I must. ये सारी languages है which reactive people use. Now let's understand what do proactive people use as their language.
Let's look at our alternatives. I can choose a different approach. I control my own feelings. I can create an effective presentation. I will choose an appropriate response. I choose. I prefer. I will. I can. I must. Begin with an end in mind. That's the second habit of the 7 habits of the highly successful people. They always begin with an end in mind. मेरा लक्ष्य क्या है? What's my goal? What's the result which I want? What's the money in the bank which I want? What's the health status which I want? What's the relationship which I want to have? What's the kind of habits which I want to have? All that starts with the end in mind. Every successful person is a visionary. They've got a vision to accomplish. And that's where in Think and Grow Rich, this is a brilliant combination. When Napoleon Hill says, having a definite major purpose is the first principle of success. And we also have this first thing. And you be very clear what exactly you want in your life. Your goals have to be specific, measurable and time bound. मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे about goal setting. You can check out on those. How you can really start to have some meaningful goals to get the results. Stephen Covey says you've got to have a personal vision statement, and he gives an example of his own vision statement. You got to have a vision statement about yourself which outlines आपके purpose को आपके outline करता है, आपके सारे values को outline करता है. For example, for me, integrity is important. For me, discipline is important. Family is important. Maybe contribution is important. Growth is important. ये सारे मेरे value systems है. तो आपके value systems के साथ में आपकी results को और आपकी vision को combine करके आप एक vision statement बना सकते हो. I would highly recommend to follow Bob Proctor's practice of having a power life script. What is a power life script? It is a vision statement कि मेरी जिंदगी मुझे कैसे विजन करनी है. How do I visualize my entire life, every area of your life? All that will come in your vision statement. Let's go on to the third habit, which is I think one of my favorite habits, one of the reasons for my success. What is that? Put first things first. The main thing is to keep the main thing the main thing. Prioritize करिए. In fact, beautiful quote by Stephen Covey. Stephen Covey बोलते हैं that time management जैसी कोई चीज ही नहीं है. Time management is a misnomer because you cannot manage time. Understand this. सभी के पास 24 घंटे हैं. मेरे पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, जेफ बीजोस के पास 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क के पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं. So how can you manage that time? कि 24 का 23.5 कर दूं क्या, 25.5 कर दूं क्या, कुछ होने वाला नहीं है. Time cannot be managed, but you can manage the activities. So you cannot manage time. Time can never be managed. Manage your activities, and that's where you can really start to prioritize. There are several time management videos in my YouTube channel. You can check it out. But यहाँ पे Stephen Covey बोलते हैं that you divide this time management into 4 parts. That means you have a quadrant. 4 quadrants आप बनाएंगे, and there are 4 boxes to this. The first quadrant is where you have all the urgent tasks and the important tasks. यार ये करना ही करना है, ये इमरजेंसी है, डेडलाइन है यार, ये तो डालना ही ना, एग्जाम है कल, यू गॉट टू डू दिस, कल डेडलाइन है, यू गॉट टू कंप्लीट दिस, आज लास्ट डे ऑफ द बिल पेपर, करना ही करना है पेमेंट. सो ऑल दैट विल कम विच इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आएंगे सारे टास्क ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के. सेकेंड क्वाड्रेंट विच इज कॉल्ड एज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल आपके हेल्थ के बारे में कि सुबह उठ के आपको जिमिंग करना है. लेट्स से यू वांट टू डेवलप दैट न्यू स्किल सेट, मे बी यू वांट टू गेट इनटू दैट प्रॉपर रिलेशनशिप एंड गिव सम टाइम टू योर पेरेंट्स. रियली ऑल दैट इज नॉट अर्जेंट. कोई आपको पुश नहीं कर रहा है, बट आपको प्रोएक्टिवली उस पर काम करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. द थर्ड क्वाड्रेंट इज वेयर ऑल दोस टास्क्स विच आर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट. खतरनाक है यार क्वाड्रेंट ये. इट्स अ किलर क्वाड्रेंट. इट किल्स अ प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे हम लोग फंसे रहते हैं कि यार अर्जेंट चीज हो गई यार, अर्जेंट 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 अर्जेंट, लेकिन शायद से वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल नोटिफिकेशन, मे बी योर ईमेल्स, अरे क्या कौन सा नया ईमेल आया, चेक कौन सा किसने व्हाट्सएप किया. सो इट्स वेरी अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट. मे बी किसी ने बोला मेरा कर देना काम यार, अर्जेंट मुझे काम जाना है, तो इट गॉट टू बी वेरी अर्जेंट कि नहीं उसको बुरा लगेगा. इट्स बिकम अर्जेंट. It becomes urgent, but it is not at all important for you because it is not aligned to your goals. And the fourth one, which is not urgent and not important. यहाँ पे तो हमें बिल्कुल रहना ही नहीं है यार. यार क्या पे क्या होगा यहाँ पे? चलो मैच देखनी है ना, चलो क्रिकेट मैच देखनी, वर्ल्ड कप चल रहा है, लेट्स डू दिस. स्टार्टिंग में पिच के नमूने के बाद में पिच का जब अब इंस्पेक्शन होगा, राइट फ्रॉम देयर राइट टिल द एंड, हाईलाइट की हाईलाइट भी हम देखने वाले हैं. Maybe 7 hours on your Instagram. Throughout the day, you are at 10 hours on your phone. All that is not urgent and not important. This is all lethargicness. And that's, you never want to be in this particular quadrant. This is completely killing your productivity.
तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है एंड यहाँ पे मैंने आपको एक टूल दिया है to help you to plan, which is also there from Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. It is there in the description. यहाँ पे Stephen Covey बोलते हैं, you need to plan your entire schedule on a week basis. Why? वीक पे आप प्लान करेंगे ना, वो बेटर रहेगा. इट्स अ वेरी गुड थिंग. 7 डेज में आपका प्लानिंग रहेगा. मे बी वीकेंड को बैठो 2 घंटा दीजिए. सो आई हैव गिवन अ टूल हाउ यू कैन प्लान योर एंटायर वीक. डाउनलोड दैट टूल एंड स्टार्ट डूइंग दिस. आई एम डूइंग दिस एवरी सिंगल डे फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स के यार. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. दैट्स व्हाई बिकॉज टू डू लिस्ट बिकम्स टू मच यार. इतना सब कुछ करना है, इट बिकम्स टू ओवरवेलमिंग. So I don't have to-do list, but I have a weekly planner, and that's where I can move forward and get the results. The fourth habit is think win-win. Always focus on beneficial relationships, beneficial deals. का सबका भला हो. Everyone should be happy. Everyone should be winning. That is the win-win relationship. अभी कलयुग के ज़माने में आप बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या? Win-win कभी possible होता है क्या? So here he gives 5 different dimensions of different kinds of strategies. तो यहाँ पे the first dimension is a win-win situation, जहाँ पे even I am winning and even you are winning. For example, in this YouTube channel, well, I am winning, I am getting the visibility, I am getting, my channel is growing by giving all this content completely free for you. And you are also learning from this. So this is a completely win-win relationship where I am also benefiting, even you are benefiting. This is an example of a win-win relationship. The second dimension is win-lose. यहाँ पे कलयुग में लोग स्मार्ट बन जाते हैं. मेरा क्या है उसमें, What's in it for me? उसका जो होगा होने दे भाई. I always believe life is a zero sum game. जो उसकी हार होगी तो ही मेरी जीत होने वाली है. I believe in that. And some people are always programmed that way कि उसका नुकसान, I mean they go for sharp bargains कि नहीं यार उसको और पैसा निकाल दे उससे, and that's why से कि उसको और माल बेच. That's a win-lose relationship. It is not beneficial because life is a full circle. What goes around comes around. If you are doing a win-lose relationship for one transaction, trust me, you are going to get a lose-win relationship towards you. You're going to lose somewhere else. Always focus on the first one, which is a win-win. But still people are always there, win-lose karte, but they get temporary results, but the results are not long-lasting. The third dimension is lose-win. छोड़ यार, चल ठीक है, तू जीत गया भाई, मैं हार जाता हूँ. People become like victims. देखा, मैंने बड़ी सी कुर्बानी कर दी, मैंने सब कुछ दे दिया उनके लिए, बिकॉज हाँ मुझे देना था. Some people want to be that way, like giving the, oh I'm losing everything, you win. And some people want to portray their greatness. It doesn't work. Lose win एक बार काम करेगा, but ultimately it is going to kill your relationships. ये imbalance लाएगा आपके relationships में, and you will feel victimized कि यार क्यों मैंने ऐसा किया. You will not be happy and satisfied at the end of the day. So never focus on lose-win relationships. For example, a mother also, कि ठीक है कुर्बानी देते, but the relationship impacts on a longer duration. It definitely impacts. So you got to be very clear. What's in it for me, which is a win, and also for the others. That's the best solution. So never focus on lose-win also. What's the fourth dimension? Lose. अरे बाप रे, यहाँ पे भी लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है. मैं तो नहीं जीतूंगा लेकिन तुझे भी जीतने नहीं दूंगा, देखता हूं तो कैसे जीतता है. What happens? Lose. I mean, बड़े कोर्ट कचहरी में जाते हैं एंड चलो 10 साल 15 साल मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं तो मरूंगा, आपको भी लेके मरूंगा. हाँ, that's what happens. It's a lose thing. Never ever focus on this because it kills your entire potential. आप अपनी एनर्जी कहाँ गवा रहे हो यार, खुद भी हार रहे हो, दूसरे को भी हरा रहे हो, क्यों करना. But still some people are not able to control their emotions and they go in the negative spiral कि हारेंगे तो सब साथ में हारेंगे, मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे. That's also a not good kind of a dimension, which is a lose thing. The fifth dimension is win-win or no deal. That's also the part of the first dimension. So यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि यार win-win होगा तो ठीक है, otherwise there won't be no deal. There won't be any deal at all. That's also a part of this entire dimension. And there are some people who say कि यार जीतेंगे तो सब जीतेंगे, otherwise there won't be any deal. Where there's not a proper solution coming right now in their mindset. There is not a proper creativity happening. तो ये भी एक fifth dimension हो गया. See, in the book 7 Habits of Highly Effective People, to get all these dimensions properly understand, उन्होंने 2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखने के लिए बोला है. एक है आपका कंसिडरेशन और दूसरा है आपका करेज. तो 4 बॉक्सेस के फ्रेमवर्क में आप जब आप बुक पढ़ी स्टडी करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस कि करेज और कंसिडरेशन के साथ में मिलके मैं कैसे कौन से रिलेशनशिप कौन से डिमेंशन पे मैं गोल्स अचीव कर पाऊंगा. इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग. आई वुड हाईली रिकमेंड टू रीड द बुक टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे बढ़ रहे हो. दैट्स द फोर्थ वन, विच इज थिंक विन. लेट्स गो टू द फिफ्थ हैबिट, विच इज
Seek first to understand and then to be understood. What a powerful concept. क्या जबरदस्त concept है. See, most people in this world are only listening to reply. सुनते ही नहीं है. We don't even call it listening. They are just hearing. See, Bob Proctor says a beautiful thing. You hear with your ears, but you listen with your emotions. आप सुनते हो कान से, लेकिन आप रियल लिसनिंग करेंगे अपने हार्ट से, अपने इमोशन से. और जब भी आपने ये हैबिट, ये क्वालिटी समझ ली, दैट आई सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, आई एम्पैथाइज कि क्या बोलना चाह रहा है यार, लेट मी हैव अ लिसन, मुझे कान तो देने तो कि क्या बोल रहा है यार, एंड आफ्टर ही कंप्लीट्स देन आई विल गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स. Most people are dying of this because they feel कि मेरा कोई सुनता नहीं है. You look at a homemaker कि कोई भी मेरी सुनता नहीं है. छोटा बच्चा कोई मेरी सुनता नहीं है. Maybe an employee who is not having good personality traits, who is an introvert, कोई मेरी सुनता नहीं है. और वो सारा potential दबा देते हैं. If you can get this habit of seeking first to understand, I'll tell you, you'll become a great leader. Great leaders are good listeners. I mean, there has to be some kind of a context. You got 2 years, and that's where you really start to listen more and speak less. And when you are listening, you don't listen what you need to reply. Most people are saying, "अरे, उसने ऐसा बोला ना, बोलने दे, पूरा होने दे, मेरे पास जवाब हाजिर है." Oh, that's not the way to listen. When you listen, you give your full attention. You make that person feel that he or she is the most important person in the world. And that's where you can build that connection. तभी vibrations connect होंगे, तभी attraction होगा, तभी results आएंगे. It's a very powerful distinction. How, look at yourself. How are you communicating with people? Are you really listening, or you're just hearing them just to see कि मैं कैसे उसका जवाब दूँ? Don't do that. That's where you are killing this particular habit. And if you get this habit of seeking first to understand, trust me, आपके relationships, आपके results are going to multiply. The sixth one, which is again a very powerful habit, is synergize. सिनर्जाइज का मतलब एक और एक मिलते हैं तो 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं. So when you're in a group, when you are being with people around you, maybe आपके colleagues, आपके family members, आपके teammates, आपके associates, आपके customers, आपके potential customers. So you value the differences. You look at the strengths कि यार ये उनकी strength है, ये मेरी strength है. कुछ difference of opinion है. Forget about those differences of opinion. We agree to disagree. But let's focus on the strengths. And when we combine together, that's where we can synergize. We can create something big. For example, in cricket match, sometimes every person is not a good batsman, but you need to have a bowler also, you need to have a good fielder also, you need to have a good captaincy also. और जब ये सारी टीम इकट्ठा मिलती है, सबके strengths मिलते हैं, तभी वो synergy होती है, and that's where you really start to get the results. Virat Kohli maybe not a good captain, Rohit Sharma a better captain. So that's the synergy, and you start to synergize, use on your strengths, and that's where you can really start to synergize and get this 6th habit. 7th habit is sharpening the saw. Let's say you want to cut the tree with the saw, and you say, I don't have the time to sharpen the saw, it's going to take 6 hours. But a smart woodcutter will actually use 5 hours of its time to sharpen the saw, and will use it only 1 hour में एक ही घंटे में the tree is cut. That's where you sharpen the saw. Sharpening the saw means every area of your life you're gaining importance, you're improving, you're growing, there is continuous improvement, there is progress. 4 areas बताते हैं स्टीवन कोवी. Your personal, your mental, your spiritual and your emotional. ये पूरा ग्राफिकली बताया गया है बुक में. तो ये रहे आपके लिए 7 habits. Don't make the mistake of jumping on the 7 habits directly. पहले आप पैराडाइम पे काम करेंगे, प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, बेस बनाएंगे, उसके बाद में एक एक हैबिट्स को फोकस करेंगे. And once you do that, you're going to be super effective. Effectiveness of doing the right things, the right time, at the right place, and getting the right results. And once you understand this, you are on your journey to success. And I want to end this summary of the 7 habits of highly effective people with this beautiful quote by T.S. Eliot. And it goes like this: we must not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we began and to know the place for the first time. Isn't it beautiful? आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और उसी मुकाम पे पहुंचेंगे, तभी आपको लगे यार ये पहली बार यहाँ पे आया हूँ. That's the journey of self-discovery. The more you understand your own self, the more you'll be becoming better in your habits, the better would be your results. I hope I have added value to you in this particular summary of 7 habits of highly effective people. I would highly recommend to read this particular book.
and also like this particular video, share this with someone whom you care, and please subscribe to our channel so it gives us a win-win relationship for us to move forward. I am Sidharth Shah. Let's get ready to think and grow rich.